Good morning, students. In previous class, we have completed our scene 1 of the lesson A Gift of Chappals. Today we will start our scene 2 of the same lesson. Here you can see the picture. Next, what will happen? Mridu went to meet Lalli. Here you can see in window there are 3 children seeing at Lalli. So there was a violin in Lalli's hand, and in front of Lalli there was a music teacher. You can see here. Her music teacher was bald head and he was wearing a gold chain around his neck and also wearing a golden ring on his hand. Now let's start to read our lesson. Scene number 2. Mridu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. Her elbows jutting out her eyes glazed the concentration. We have just see picture in our textbook was the bony figure of the music teacher. He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuff. A gold chain gleamed around his leathery neck. I just said you that he was wearing a gold chain around his neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. Here, next start, he played a few notes. Then the music teacher had played a few notes. Lalli stumbled behind him on her violin. जैसे जैसे उनके जो म्यूज़िक टीचर थे वो नोट्स प्ले कर रहे थे, लल्ली भी उनको वैसे फॉलो कर रही थी. यहाँ पे हमने अभी बात की बच्चों की जो लल्ली का जो म्यूज़िक टीचर थे वो कैसे थे उनको डिस्क्राइब करते हुए ऑथर ने बताया कि उनके हेड पे थोड़े बाल कम थे, यानी टकले, जिसके सिर पे बाल नहीं हो उसे बेल्ड बोलते हैं हम. फिर देन उनके जो म्यूज़िक टीचर थे लल्ली के, उन्होंने गोल्ड चेन पहनी थी अराउंड हिज नेक, एंड देन अपनी जो उंगली थी, फिंगर थी, उसमें डायमंड रिंग पहनी हुई थी. देन he played few notes and Lalli followed behind him on her violin, which looked quite helpless and happy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Then रवि ने क्या बताया कि जो म्यूज़िक टीचर वायोलिन प्ले कर रहे थे और लल्ली वायोलिन प्ले कर रही थी, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस था. जो म्यूज़िक टीचर वायोलिन प्ले कर रहे थे तो वो जैसे मेलोडी लग रहा था. Mridu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Squawk! There was Lalli drawling again. Then Lalli ने again थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, अम्मा
केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा। फिर गेट से आवाज आई, किसी ने जैसे पुकारा हो, अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर। देन व्हाट हैपन, द बेगर केम टू हिज गेट। एक बेगर आता है, भिखारी आता है। रवि's mother was talking with her grandmother. So that beggar sound make them irritating. So her mother ordered Ravi that send that beggar away. उनकी जो मदर, रवि की जो मदर थी, उसने चिल्लाया और रवि को पुकारा और बोला वो बेगर को वापिस भेज दो। From the back veranda where she was chatting with Tapi. Ravi's mother was chatting with her mother, Ravi's Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. Then उसकी जो मदर है, रवि की जो मदर है, वो अपनी मदर को मीन्स रवि की ग्रैंड मदर को एक्सप्लेन करती है दैट बेगर हैज़ बीन कमिंग देयर एवरी डे, कि वो जो बेगर है वो एवरी डे वहाँ पे आती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना जब रवि बाहर जाता है तो उसके पीछे पीछे जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. फिर जो बेगर है वो क्या करता है, तो रवि के घर के सामने जो गार्डन है, ही वॉज लेइंग डाउन देयर, वो अपना एक क्लोथ बिछाता है और ट्रंक के आगे नीम ट्री के नीचे ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ एंड देन लिंट देयर। एट दैट टाइम रवि केम, तभी रवि आता है और बेगर से बोलता है यहाँ से चले जाओ। गो अवे, सेड रवि स्टर्नली। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड and gazed at each of the children one by one. Then what did the beggar do? Beggar opened his eyes and stared at the children one by one. और जो तीनों बच्चे थे वहाँ पे, रवि, मीना एंड मृदु, तीनों के सामने वो जो बेगर था वो घूर घूर के देखता था। The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I can't believe that they would turn me away. Then जो बेगर है वो बच्चों से क्या बोलता है कि इस घर की जो लेडीज़ है वो बहुत काइंड है एंड वो मुझे कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगी। मैं ये लास्ट एक वीक से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा। ओ, सेड हिज वेल माइट बी, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. With its few remaining teeth stained brown with betel chewing. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen, called रुक्कुमणि. Then जो रुक्कुमणि है, रवि की जो मदर है,
वो रवि से बोलती है कि बेगर से बोल दो कि किचन में कुछ भी बाकी नहीं पड़ा है, कुछ भी बचा नहीं है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. देन वो क्या बोल के जाती है वहाँ से कि बेगर को बोल देना ही हैज़ नॉट टू कम अगेन. वो फिर कभी वहाँ उनके घर पे वापस नहीं आए. रवि डिडंट हैव टू रिपीट it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. Then उसकी मदर ने जो बोला रवि को वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. He doesn't need to repeat anything. Why? Because the beggar already heard all that her mother had said. The beggar sat up and sighed. And by hearing this, ये सुन के जो बेगर था वो खड़ा हो गया. The beggar sat up and sighed. And जो बेगर था वो वहाँ से चला गया. Here we are ending our today's session. In next session, we will continue with our remaining lesson. Thank you everyone.